Good morning, everyone. Am I audible? I hope you can see the red hat screen, right? Okay, so today we'll start with one important topic of the Linux. Okay, that is the shell programming. Okay, so as you know that what exactly the program is. Okay, जैसे हम लोग बाकी सॉफ्टवेयर्स में प्रोग्रामिंग करते हैं, the same thing we can do it in the Linux also. Okay, when we want to execute the multiple commands at the same time to get the particular output. Okay, so in that case, instead of writing all those commands in a single line, we can store all those commands in one file, and we can make this file as an executable file. And this file or this program, which is executable one, we call it as a shell program. Okay, we also call it as a shell script. Okay, in the Linux, whatever program we are writing, okay, we call it as a shell script. ठीक है, so normally shell script होता क्या है कि जहाँ पे आपको multiple commands एक ही फाइल में स्टोर करके रखने हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है और वो together they are giving some proper output. Okay, so for this purpose only we are storing all those commands in a single file. Okay, and we make this file as executable file. Okay, normally when is as if there is no such rules. Okay, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिक्ट रूल्स है कि मतलब जैसे पाइथन में आप प्रोग्राम करते हो तो उसका एक्सटेंशन py होना ही चाहिए। जब आप सी में प्रोग्राम करते हो तो उसका एक्सटेंशन डॉट सी होना ही चाहिए। जावा में प्रोग्राम करते हो तो डॉट जावा एक्सटेंशन होना ही चाहिए। As such, we don't have any such kind of rule when you are doing the shell scripting. Okay, but for our convenience, as we having the number of files within our current directory, to understand which is the executable file or which is the shell script file, we are giving the extension as a .sh. Okay, this is not compulsory. Even if you will not give the extension as a .sh while saving the file, we can make this file as executable file. Okay, so shall we start with the shell programming? Yes. Good. Okay. 1 second. Let me open the terminal. Okay. First, I will go into my current directory. Okay. Now we'll see how exactly we can create the shell program. Okay. We'll start with some basic program. What are the different rules of writing the shell program? Okay. So normally, when you are writing the shell program, instead of using the cat command, or as we are creating some file and we are storing the data into this file, so you can do it with the help of the cat command also. You can do it with the help of the FBI editor also. Okay, if you will do it with the cat command, then you will not be able to edit the file. Okay, so instead, if you will use the vi editor, and with the help of the vi editor, if you will create the file, it will be helpful for you to edit the file at any time, right? So suppose I'm creating one program, for example, the first program as a script program. Okay, as I told you, you can give the extension as a .sh. Okay, but it's not a mandatory one. This is just for our convenience, that the .sh means it's the shell script file. Okay, sorry Priya, I don't understand your query. Ma'am, last time recorded like was not visible. It was too small. Is it? I will check. Yeah. Yeah, I will check. I have uploaded, but I have not checked. Can you just maximize this one? Yeah, sure, I will check. Oh, Okay, so we'll move to the script.sh. Okay, so we are doing it in the vi editor because it will be helpful for you to edit the file at any instance. Okay, now I will insert the data first of all, what I want to execute. Okay, so normally when you are writing the shell script, okay,
द यू कैन पुट द कमेंट्स, कोई भी प्रोग्राम है, आपको पता है कि प्रोग्राम में हम लोग कमेंट्स लिख सकते हैं, ओके। सो वेन एवर यू आर राइटिंग कमेंट्स इन द शेल स्क्रिप्ट यू हैव टू स्टार्ट द लाइन विद द हैश, okay, except the first line. For the first line the hash is not considered as a comment line, okay. In the first line normally it is means it is a best practice, okay, if you will specify the shell name, okay, means for example, okay, your shell name, here I am writing it as a bin bash, okay. Why we are writing this shell name in the first line, okay, see, even if you will not write this it will work, okay, but it's the best practice to specify the shell name in the first line, because the first line, whenever you are writing with the comment and exclamatory sign, system will consider the corresponding program will execute in the child shell with the name as a bash shell, okay. Why we are writing this shell name in the first line? See, whenever you are executing any shell program, the shell program always executes in the child shell, okay. Means currently you are working on the parent shell, ओके। पैरेंट शेल में आपने एक फाइल स्टोर किया है, जब आप उसको एज अ शेल स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट करते हो तो सिस्टम क्या करता है, एक चाइल्ड शेल ओपन करता है और उसमें वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो नॉर्मली मतलब लिनक्स में दिस इज अलाउड to work in one shell and you can execute your program in another shell, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बैश शेल पे काम कर रही हूँ और मुझे कॉर्न शेल में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, देन यू कैन गो फॉर द चाइल्ड शेल एज अ कॉर्न शेल। सो जो भी शेल में आपको आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो शेल का नाम आप एज अ फर्स्ट लाइन मेंशन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो शेल पे आप काम कर रहे हो वही शेल पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, but it creates one child shell for execution of the shell script, okay. So this is the best practice when you are writing the shell programming, to mention the first line as a shell name where you exactly want to execute the first corresponding shell script, okay. Do you understood why I have written this? Yes, Sancha? Yes, students, please tell me. Okay, so this is my first line that I need to mention, okay. Then as I told you, you can put the comment line, okay, anywhere in your shell program, okay. Only the comment line should start with the hash sign, okay. So suppose I am writing this comment as this is sample shell program, okay. So this will be considered as a deadline for the program. It's not a part of the program, but this is just for as a documentation purpose, like to better understand the program. We are mentioning the comment line in the program. Okay. So आप कहाँ पे भी आपके खुद के कन्वीनियंस के लिए इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में कोई भी लाइन मेंशन कर सकते हो। ओनली दिस लाइन शुड बी स्टार्ट विद द हैश सो दैट द सिस्टम विल कंसिडर दिस इज एज द कमेंट लाइन, okay. Now how you can write down the program, as I told you we can मीन्स प्रोग्राम क्या होता है, तो जहाँ पे हम लोग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं एंड we are making this file as executable file so that all those commands will execute at the same time, okay, right. So the same thing we'll do this, okay. We'll write down the multiple commands here, okay. So suppose I want to know that what is the today's date, okay. So how I will write down the today's date is, okay. As I already told you, when you want to write down the command in another command, then how exactly you are writing the command? Yes, मुझे अभी यहाँ पे date command लिखना है, okay. Suppose I will write down this like this, whether this date command will give me the proper output in the output window. Yes, can anyone tell me, do you remember this? No. So what you have to do here, as I want to put this date command within this echo command, I need to write down this in the not single quote, it is in the backtick. Okay, I have to put the backtick over here, right? Hmm? Very good.
तो ये मैंने फर्स्ट कमांड लिखा है जहाँ पे मुझे ये चाहिए कि करंट डेट क्या है वो डिस्प्ले होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, सेकंड. Okay, then I want to see what is the current month calendar. Okay, then again I will use the echo command, and this month calendar is, okay. Okay, now how I can do this. Okay, so calendar command के लिए हम लोग कौन सा command use करते हैं, that is the cal. Okay, and here I want to calendar of the current month and the current year. Okay, so if you don't know the current month and the current year, you can also specify the current month and the current year with the help of the date command. How you can specify this? Date आपको पता है ऑलरेडी, ये हम लोग ने पहले भी किया है. दैट इज द प्लस परसेंटेज m will give you the current month number, space, this is the 2000 something. So current year number you want to specify, you how you can specify this, percent y, right? Double quote complete. Then I have to complete this practice. You understood this, what I have written here? You understood this command? Yes, समझा? मुझे क्या चाहिए था, करंट मंथ का कैलेंडर चाहिए था. ओके, आपको करंट मंथ का कैलेंडर चाहिए रहता है, तो हम लोग कैसे करते हैं कि कैल, देन करंट मंथ नंबर पुट करते हैं, देन करंट ईयर नंबर पुट करते हैं. मीन्स फॉर अप्रैल 2021, हाउ आई विल राइट डाउन द कमांड कैल 04/2021. Okay, but I don't want to specify the particular month number. कभी भी मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी तो वो मंथ का नंबर यहाँ पे लेना चाहिए. इसीलिए मैंने कैल के अंदर डेट कमांड यूज किया, सो दैट वो करंट मंथ नंबर देगा और परसेंट वाई करंट ईयर नंबर देगा. ओके, समझा? ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो कमांड्स लिखे हैं, मुझे और एक कमांड सपोज लिखना है, इको माई शेल नेम इज, what I need to write down here. Okay, how I will get the shell name? Yes, can anyone tell me? लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था अबाउट द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स. Yes, how I will get the shell name? No, can we use this environmental variable to get the current shell, right? बराबर है. सो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें 3 कमांड्स एट द सेम टाइम एक प्रोग्राम में मैं स्टोर करना चाहती हूँ. ठीक है, so I hope you people understood all these commands that I have written within this shell program. Okay, so now I need to save this file. Okay, so हम लोग कैसे करते हैं, escape colon x enter, script.sh फाइल सेव हो गई. ठीक है, now to make this file as an executable file, okay, there are different ways of executing the program. Okay, normally कैसे होता है ना कि मुझे ये अभी ये दिस इज अ सिंपल फाइल, मैंने अभी ये जो फाइल बनाई है दिस इज जस्ट ऑर्डिनरी फाइल, but I need to make this file as an executable file. Can anyone tell me how I can make this file as an executable file? Yes, what we need to do to make this file as an executable file? Yes, did you remember something? No, do you remember the file permissions? Yes, suppose I am executing the command ls minus l script dot sh. Okay, you can check there are means these are what the standard permission given to the script dot sh. This is just ordinary file. rw dash means this file is not the executable file. बराबर है. The third permission is it does not exist. Okay, for user groups and others, means what, this is just a text file or this is just an ordinary file, this is not the executable file. Okay, so first thing I need to do that I can change the permission of the file and I can give the permission to the user as it is the executable file. Okay, how I can give this, so u plus x followed by the file name. Okay, script.sh.
मैंने अभी ये फाइल को परमिशन दिया है. ओके, यू कैन चेक यूजर का परमिशन चेंज हुआ है. इट it means we can consider this file as the executable file. Okay, now once the file will be as executable file, you can run directly. Means see, normally हम लोग मतलब एक एब्सोल्यूट पाथ रहता है और एक रिलेटिव पाथ रहता है. एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? जो डायरेक्टली रूट से ज्वाइन होता है, बराबर है. सो दिस फाइल इज कंसिडर्ड एज एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो मैं डायरेक्टली एब्सोल्यूट पाथ यूज करके मैं ये फाइल को रन कर सकती हूँ. ओके, सो आई कैन रन लाइक दिस. ओके, यू कैन सी मैंने मल्टीपल कमांड्स एक ही फाइल के अंदर स्टोर के रखे थे. मैंने वो फाइल को एज एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाया एंड मैंने वो फाइल को एग्जीक्यूट किया बाय यूजिंग डॉट स्लैश एंड द फाइल नेम. The first line gives me the current date. The today's date is here. The output of the date command is displayed. This month calendar is the output of the cal command is displaying. The shell name is $shell is displaying. Are you getting me? How to write down the shell program? Yes. ओके, मैं फिर से आपको प्रोग्राम ओपन करके दिखाऊं. यस साक्षी. ओके, मैं फिर से एक बार आपको प्रोग्राम दिखाती हूँ. ओके, आई नीड टू गो इनटू द vi script.sh. ओके, मैंने सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो लिखा है, एज आई टोल्ड यू यू नीड टू मेंशन द व्हाट विल बी द चाइल्ड शेल. ठीक है, then I have written the comment line that this is a sample shell program. Then I want to execute the three commands together. Okay, so instead of writing these three commands on the command line, I have saved these commands in one file with the name that is the script.sh. The first command is echo today's date is. ये echo के अंदर मैंने और एक command डाला है date. So that's why I have put this date command within a backtick sign. Okay. Then the second command echo this month calendar is. अब कैलेंडर हम लोग को कैसे मिलता है? विद द हेल्प ऑफ द कैल कमांड. ओके, कैल करंट मंथ का नंबर डालना पड़ता है, करंट मंथ का ईयर डालना पड़ता है. पर ये कभी भी आप एग्जीक्यूट करोगे, मतलब अभी ये मैं ये मंथ में एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो मुझे 04 मिलना चाहिए. नेक्स्ट मंथ में मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो वही मंथ का नंबर 05 मिलना चाहिए. ओके, सो फॉर दिस पर्पज आई एम टेकिंग दिस करंट मंथ नंबर एंड करंट ईयर नंबर फ्रॉम द डेट कमांड. Okay, date plus percentage m will give you the current month number. Date plus percent y will give you the current year number. बराबर है. एंड इको माई शेल नेम इज द $shell. तो ये तीन कमांड मैंने एक साथ एक ही फाइल में लिखे हैं. मैंने ये फाइल को सेव किया. ओके, मैंने ये फाइल को सेव किया, फिर उसको मैंने ये किया, उसको परमिशन चेंज किया. बिकॉज करंटली इट्स जस्ट टेक्स्ट फाइल. मैंने उसको परमिशन दिया, दैट इज chmod u+x script.sh. ठीक है, उसका परमिशन चेंज हो गया. फॉर यूजर इट इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड विद द हेल्प ऑफ जस्ट डॉट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एंड फाइल नेम, the file means we I'm able to execute this file. ठीक है, so the first line gives me the output of the first command. Then second line, I am getting the output of the second command, and on the third line, I am getting the output of the third command. Okay, समझा? Good. Okay. Now, if you don't want to do it again and again, मतलब आपको ये permissions change करना नहीं है, okay? तो आप there is a second way you can write down the sh command and the file name will automatically change the permission of the file. मतलब वो file में actual permission change नहीं करता है, पर it makes the file or it considers this file as executable file and executes the particular program. बराबर है. यहाँ पे हम लोग को कैसे पहले उसको सेज मोड से परमिशन चेंज करना पड़ता है और बाद में आपको उसको आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. बराबर है. इफ यू डोंट वांट टू डू दिस एवरी टाइम, कि आपको हर एक टाइम वो प्रोग्राम की परमिशन चेंज नहीं करने हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने हैं, तो वो केस में आप डायरेक्टली सिर्फ sh कमांड भी यूज कर सकते हो. ठीक है. यस. So I hope you people understood what is the basic structure of the file, how exactly we have to create the file,
and how we can execute the file. Okay, shell program in the Linux, right? Yes, any doubt? Okay, now we'll see the next. Okay, now to make this shell program more interactive. Okay, कभी भी हम लोग shell program करते हैं तो हम लोग वो shell program ऐसे ही बनाते हैं कि it will be more interactive. Means at a output time you want to take the input from the user. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक टाइम पे the program एक static हो जाए. Okay, हम लोग को static program नहीं बनाना है, हम लोग को वो interactive program बनाना है. मतलब जो भी आउटपुट आपको देना है यू वांट टू गिव दिस आउटपुट विद द हेल्प ऑफ द यूजर्स इनपुट. ओके, तो वो केस में आउटपुट टाइम पे आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो. ओके, so how you can take the user's input, okay, at the runtime. Okay, so for this purpose we are using the read statement. Okay, read statement से हम लोग यूजर से रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं. Okay, to give the output. Now how we can do this, we'll create the second program. Okay, suppose this is the script 2.sh. Okay, now as I told you, you need to put sorry, insert data, then colon exclamatory sign, then I need to put the bin bash. Okay, now as I this is the suppose where I want to take the input from the user at the runtime. Okay, so first statement I will write down echo. मुझे अभी ये प्रोग्राम इससे करना है ना कि ये प्रोग्राम है जैसे हम लोग ने इसके पहले ग्रेप कमांड लर्न किया है. ओके, या पर्टिकुलर फाइल में पर्टिकुलर पैटर्न सर्च करना है. ओके, तो हाउ यू कैन राइट डाउन द प्रोग्राम. तो वो केस में आप क्या करोगे, पहले यूजर को पूछोगे कि विच पैटर्न यू वांट टू सर्च. ओके, सेकंड यू विल आस्क यूजर इन विच फाइल एग्जैक्टली यू वांट टू सर्च द पर्टिकुलर पैटर्न. ओके, तो ये केस में आपको रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेना है. So first of all, you will ask user enter the pattern that you want to search. Okay, enter the pattern that you want to search. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है. ओके, मुझे ये पैटर्न यूजर से लेना है तो उसके लिए मैं एक रीड स्टेटमेंट लिख सकती हूँ. ओके, read and I need to specify the variable. Okay, suppose I am specifying the variable as a key name. मतलब whatever pattern the user will enter, it will stored into the variable that is the key name. ठीक है, then I will ask user to enter the file name. Okay, enter file name in which you want to search the particular pattern. Okay, so ये फाइल नेम अभी जो यूजर देगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो वो वेरिएबल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा. दैट इज द एफ नेम. ओके, सो रन टाइम पे जब यूजर को पहला मैसेज जाएगा कि एंटर द पैटर्न, दैट पैटर्न विल स्टोर इनटू द पी नेम. देन सेकंड मैसेज जाएगा एंटर द फाइल नेम, दैट फाइल नेम will store into the f name. Okay, now we will display one message as echo searching for sorry. Okay, here what we are doing exactly searching for. अभी जब मुझे ये पी नेम में जो वैल्यू स्टोर की है वो मुझे प्रोग्राम में एक्सेस करनी है, कोई अनदर कमांड में एक्सेस करनी है, देन आई कैन एक्सेस इट विद द डॉलर साइन. Okay, dollar p name will gives you the information that we have stored into the variable p name. Okay, so searching for p name from file, which file that is stored into the f name, right? Okay, ये मैसेज सिर्फ मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ. अभी मैं सर्च कैसे कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ द grep कमांड. ओके, grep कमांड इसके पहले भी हम लोग ने किया है. grep कमांड हम लोग कैसे लिखते हैं, grep pattern name and a file name. Okay, so how you can write down this, grep dollar p name, okay, and a dollar f name. Okay, so ये यहाँ पे grep कमांड क्या करेगा, वो चेक करेगा और वो पैटर्न वहाँ पे अवेलेबल है तो वो डिस्प्ले करेगा. ओके, एंड एंड में मैं और एक इको मैसेज लिखती हूँ, दैट इज selected records are as above. ठीक है, समझा मैंने प्रोग्राम क्या लिखा है. यस, ओके,
Now I will first of all save this program. Okay, now I will directly execute this program with the sh script true.sh. Okay, see, he is asking me, the program is asking me, enter the pattern that you want to search. Okay, now suppose I want to search the director. Okay, in which file, that is the, suppose I have the file that is the emp.lst जो हम लोग ने already बना के रखी है. Okay, see, सर्चिंग फॉर द डायरेक्टर फ्रॉम द emp.lst, जहाँ पे मैंने grep कमांड लिखा था, वो grep कमांड यहाँ पे मुझे आउटपुट दे रहा है कि emp.lst में जितने भी डायरेक्टर नाम के पैटर्न है वो यहाँ पे वो सारे रोज यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं. ओके, एंड grep का आउटपुट कंप्लीट होने के बाद मुझे लास्ट इको मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज द सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स आर एज सपोज. समझा? Yes, you understood the program? Sure, very good. ठीक है, so this is the way by which we can write down the basic shell program. Okay, now there are a number of things that we can use within the this shell programming. Okay, so here we will start exactly how we can use, what are the different things that we can use within the shell programming. Okay, so this is what the basic concept, how exactly you have to write down the shell program. Okay, now we'll see the next. One second. Okay, so there are different logical operators that you can write down within the shell program also. Okay, जैसे हम लोग कभी भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में हम लोग नंबर ऑफ कंपैरिजंस करते हैं, देन वी आर डूइंग द नंबर ऑफ थिंग्स. ओके, मैनिपुलेटिव थिंग्स हम लोग बहुत सारे करते हैं, तो वो केस में जब भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, okay, so that time we need the different types of the operators. Okay, so here we can use the two types of the logical operators. One is the ampersand ampersand, and the second one is the double pipe. Okay, these are the conditional operators you can use, where with the help of these two operators you can combine the two commands together. Okay, now what do you mean by the ampersand ampersand? Okay, ये जो दो operators है उसका मतलब how you can exactly write down this. The suppose ampersand ampersand जो है command 1, ampersand ampersand command 2. I am, suppose if you are writing like this, what do you mean by this ampersand ampersand? Ampersand ampersand का मीनिंग होता है कि सपोज फर्स्ट कमांड का आउटपुट मतलब सिस्टम को मिल रहा है. Okay, if system is able to find out output of the first command, then only the second command will get executed. Okay, and instead of ampersand ampersand, if you are writing the double pipe over here, okay, ampersand ampersand का मीनिंग होता है and, डबल पाइप का मीनिंग होता है और. ओके, डबल पाइप जब लिखते हो तो इसका मीनिंग होता है if and only if the command 1 is not able to execute, then only the second command will execute it. ओके, एम्परसेंड एम्परसेंड में जब पहला कमांड आउटपुट देता है तो ही सेकंड कमांड आउटपुट दे सकता है. ये डबल पाइप में जब पहला कमांड आउटपुट नहीं देता है, देन ओनली सेकंड कमांड विल गिव यू द आउटपुट. यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? यस, ठीक है, सो विल सी द एग्जांपल. ओके, इसे लिख सकते हैं हम लोग. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ग्रेप कमांड पता है, ग्रेप कमांड क्या करता है, सर्च करता है पैटर्न इन द पर्टिकुलर फाइल. ओके, so suppose I'm writing the file name as a lst. Okay, and ampersand लिखती हूँ. if director ये जो पैटर्न emp.lst में अवेलेबल है तो ही ये इको कमांड प्रिंट होना चाहिए, दैट इज पैटर्न फाउंड इन द फाइल. ओके, व्हाट आई वांट कि सपोज ये ग्रेप कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो पा रहा है. ओके, 1 सेकेंड, सॉरी. ठीक है, ग्रेप कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो पा रहा है, देन एंड देन सेकंड कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए. ओके, सो फॉर दिस पर्पस आई हैव रिटन द फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेप कमांड. उसमें सपोज emp.lst में डायरेक्टर का पैटर्न मिलता है तो ही ये पैटर्न फाउंड आउटपुट आएगा.
Okay, so see, here I'm getting the director pattern in the emp.lst. That's why I'm getting the output of the echo command as a pattern found. Okay, so instead, if I will put here the or sign, okay, that is the double pipe. Okay, here I'm not getting the message that pattern found, because what I told you, whenever you are putting this double pipe, जब फर्स्ट कमांड आउटपुट नहीं दे पाता तभी सेकंड कमांड एग्जीक्यूट होता है. Okay, so instead if I am writing like this, okay, pattern not found, and instead of director I will do some spelling mistake. Okay, now this pattern, or something, I will write down something else. Okay, so as this pattern is not exist in the emp.lst, okay, so ये केस में pattern manager भी है. I will write down something like one second. See, यहाँ पे अभी ये जो पैटर्न मैंने दिया है वो emp.lst में नहीं है, मतलब grep कमांड इज नॉट एबल टू गिव द आउटपुट. तो वो केस में जब फर्स्ट कमांड आउटपुट नहीं दे पाता है तभी सेकंड कमांड आउटपुट देता है when you are putting this or sign. Okay, and that's why you are getting the output as a pattern not found. You understood this? समझा? Sure, everyone? ठीक है. एम्परसेंड का मीनिंग होता है जब फर्स्ट कमांड आउटपुट दे पाता है तो ही सेकंड कमांड आउटपुट देता है. डबल पाइप का मीनिंग होता है जब फर्स्ट कमांड आउटपुट नहीं दे पाता है तभी सेकंड कमांड का आउटपुट आपको मिल जाता है. ओके, देन we'll move to the next. Okay, now how we'll check how we can store the data into the variables within a program and how we can access those variables. Okay, so variables का concept जैसे आप different C program में, Python program में use करते हो, the same thing we can do the same thing in the Linux programs also. Okay, so we'll create one program like the vi, suppose the this is the first program. Okay, I will insert the data. Okay, so here I'm creating the variables. Okay, suppose I'm writing like this, days नाम का एक मैंने variable बनाया. Okay, उसमें some value I'm storing like the 10. Okay, then I am writing the second variable with the name as a guest. Guest is the variable name, and here I'm storing some string value. Okay, so whenever you are storing some string value, it will be good if you will store it within a double quote or the single quote. Okay, now I want to access this variable into command. Okay, so for example, I'm writing the command name as echo, and I just writing the message within the echo command, that is the $guest checked in dollar dates days ago. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो ये इको कमांड क्या करेगा, ये जो गेस्ट वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर किया है वो एक्सेस करेगा, और डॉलर डेज में ये डेज वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर किया है वो एक्सेस किया करेगा. ठीक है, तो फॉर दिस कमांड द वैल्यू ऑफ द गेस्ट इज द गेस्ट दैट इज डिक्लेयर्ड अबोव, and the value of days which is the days which is declared above. Okay, suppose after this command I'm changing the value of these two variables. Okay, like the days I'm storing it as like a 5. Okay, and the guest name I'm changing the value as a, okay, like this. ठीक है, एंड उसके बाद मैं फिर से अभी सपोज ये लाइन कॉपी करती हूँ. ठीक है, एंड आई विल पेस्ट दिस लाइन. ठीक है, सो ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये पहले सेम वेरिएबल
यहाँ पे इको कमांड में एक्सेस किया है, उसके बाद मैंने ये वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज किया है। कभी भी कोई भी कमांड जो है क्या करता है, जो लेटेस्ट वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की है वो वैल्यू एक्सेस करता है। ओके, इससे क्या होगा कि मैं जब ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी, 1 सेकेंड, ठीक है। सो सपोज आई एम एक्सिक्यूटिंग दिस प्रोग्राम एज अ P1। ओके, यू कैन चेक आउट, जो मैंने पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे वो फर्स्ट इको कमांड ने लिए हैं, उसके बाद मैंने वो वेरिएबल्स के वैल्यू चेंज किए, तो सेकंड इको कमांड ने जो लेटेस्ट वेरिएबल का वैल्यू था वो एक्सेस किया है। ठीक है, समझा? ओके, ठीक है। नाउ विल क्रिएट द अनदर वन, ओके, P2, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ आई कैन डू दिस, सपोज आई एम 1 सेकेंड, सॉरी फॉर wrong command I have inserted। okay, so यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, सपोज दिस v1 where I am storing the value as the 10। ठीक है, एंड v2, इसमें मैं v1 को एक्सेस करूंगी। ओके, तो v1 को मुझे एक्सेस करना है फॉर एग्जाम, तो कैसे करूंगी, कभी भी आप वेरिएबल दूसरे प्लेस पे एक्सेस करना चाहते हो, देन यू हैव टू पुट द डॉलर साइन बिफोर दिस वेरिएबल, राइट। सो हियर आई कैन राइट डाउन $v1 plus 5। ओके, नाउ सपोज मैं ये वेरिएबल्स कमांड लाइन में एक्सेस करना चाहती हूँ, देन आई कैन राइट डाउन दिस लाइक दिस, द रिजल्टिंग वैल्यू इज, अभी मुझे फिर से v2 को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगी, $v2, बराबर है, समझा? सो व्हेन आई विल स्टोर दिस एंड मैं इसको सपोज एग्जीक्यूट करती हूँ, तो देखो इसमें आउटपुट क्या आ गया है, 10 + 5। ओके, नाउ यहाँ पे प्रोग्राम ने कैलकुलेशन नहीं किया है। ओके, सब सी, मैंने क्या किया यहाँ पे, मतलब फॉर v2 इट इज लाइक जस्ट द सेंटेंस, इट इज जस्ट द टेक्स्ट। ओके, द सिस्टम हैज नॉट कंसिडर दिस एज द कैलकुलेशन। ओके, बिकॉज फॉर द कैलकुलेशन इन a linux system we are using the different commands। ओके, आपको पता है कि कैलकुलेशन के लिए हम लोग को डिफरेंट कमांड्स यूज करने पड़ते हैं। ओके, सिस्टम हैज कंसिडर्ड दिस जस्ट अ स्ट्रिंग, ओके, वेयर प्लस इज द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, 5 is the part of the text। The system has not considered this is as an integer, okay, and they have not make the actual addition, okay, and that's why here you are getting the output as a, the resulting value is the 10 plus 5। Okay, do you understood this? Okay, now we'll see, यहाँ पे आपको मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिस्टम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। ओके, सो ऑलरेडी वी हैव डन विद द बीसी कैलकुलेटर। ओके, सो विद इन द शेल स्क्रिप्ट, ओके, आपको कभी भी कोई भी कैलकुलेशंस करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो, सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स और देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन डू द कैलकुलेशन। ओके, so for doing the calculation we can use the different commands। okay, so we'll see those commands। okay, 1 second। okay, so you can use the statement or the string as the expr. With the help of the expr you can do the calculation, for example I'm doing the 5 plus 2। okay, 1 second। expr ये आंसर दे रहा है मुझे, 1 second। okay, मैं ये शेल में करती हूँ, VIP2 करूँ, ठीक है। सपोज आई एम डूइंग दिस P2 in a backtick expr, sorry, I have not inserted the data। okay, so here in the backtick I will write down the expr। okay, 1 plus नहीं, that is the v1। okay, v1 में वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी स्टोर की है, that is the 10।
Okay, and I will put the back tick over here. Okay, we'll check whether it will give you the calculation or not. Okay, so PISH 2, no, it's again not giving me the output. Okay, so I will check what exactly the problem is. Okay, 1 second. ठीक है, let it down extr. I don't know why इधर यहाँ पे क्यों नहीं आउटपुट दे रहा है. We'll show you the next one. Okay, there is a different way of getting the calculations in the Linux system by using the test command as well as the brackets. Okay, means for example यहाँ पे मैं suppose command line पे लिखती हूँ variable 1 is equal to मुझे करना है 1 plus 5 using the brackets. Okay, so how you can do this, you need to put the dollar, okay, then the rectangular bracket, whatever the calculation you want to do. Okay, suppose here I want to do the 1 plus 5. Okay, so when I will access the value of 1, why it's not performing the maths. 1 second, sorry, not var 1. Okay, okay, 1 second. Okay. Here I'm getting the answer as a 6. ठीक है, समझा. मीन जो भी कैलकुलेशंस मुझे करने हैं मैं इससे कर सकती हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल इट्स 25 multiplied by 5. Okay, and again echo dollar var1 will give me the answer like the 125. Yes, Sakshi, what is your doubt? I don't understand which exactly you are not getting. मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम आपको नहीं समझा, या ये कौन सा पार्ट आपको नहीं समझा? VIP1. ओके, VIP1. 1 second. ओके, इसमें क्या नहीं समझा आपको? मैंने क्या किया है, वेरिएबल्स लिए हैं. ओके, एक डेज वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू स्टोर किया है 10. गेस्ट वेरिएबल लिया है, उसमें वैल्यू स्टोर किया है अमूल. ओके, जब इको कमांड में एग्जीक्यूट करती हूँ एंड डॉलर गेस्ट लिखती हूँ तो वो गेस्ट का वैल्यू यहाँ पे एक्सेस करता है. डॉलर डेज की जगह पे डेज का वैल्यू जो स्टोर किया है वो एक्सेस करता है. उसके बाद मैंने ये सेम वेरिएबल्स के नाम रखे हैं पर उनके वैल्यू चेंज किए हैं. उसकी वजह से जो नेक्स्ट कमांड इको कमांड मैंने लिखा है वो कमांड जो लेटेस्ट वैल्यू है वो एक्सेस कर रहा है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, ठीक है. तो ये ब्रैकेट में हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझा? ओके, विल डू दिस इन वन प्रोग्राम. ओके, सो आई विल क्रिएट वन फाइल, सपोज द P3. ठीक है, और हम लोग अभी ये कैलकुलेशंस करके देखेंगे. सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ. ओ माय गॉड, 1 second. ओके, इंसर्ट करना ही भूल जाती हूँ मैं. ओके, सो वेरिएबल 1, आई एम स्टोरिंग सम वैल्यू लाइक द 100. Okay, then I'm storing the another variable where I'm storing the value like the 50. Okay, then variable 3, I'm storing the value like the 45. Okay, now I want to do the calculation over this variable 1, variable 2 and a variable 3, and I want to store this value within a variable 4. Okay, so as I told you, whenever you want to do the calculation within the rectangular bracket, you need to put first of all the dollar sign. Okay, then opening and closing rectangular bracket. Within this opening and closing rectangular bracket, you have to write down whatever calculation you want to do. Suppose I want to do the variable 1. So I will access this as a dollar variable 1 multiplied by variable 2 minus variable 3. So within this, I will write down a variable 2 as a dollar variable 2, dollar variable 2 minus dollar variable 3. Okay, I need to complete this bracket. Okay, अभी ये जो कैलकुलेशन है वो कहाँ पे स्टोर होगा? दैट इज द वेरिएबल 4 में. एंड इफ यू वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल 4, you can access it into echo statement. The final result is dollar वेरिएबल 4. ठीक है, समझा मैंने क्या किया?
3 वेरिएबल्स लिए जिसमें वैल्यू स्टोर किया, उनके ऊपर जो भी मुझे कैलकुलेशन करना था वो कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, विद इन अ ब्रैकेट, ओके, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ओके, विच आर प्रेसिडेड विद द डॉलर साइन, ठीक है। सो व्हेन आई विल store this program and I will execute this program, okay, as a shp3, see I'm getting the answer as a 500, okay, मतलब ये rectangular bracket में मेरे calculations हो रहे हैं। You understood this? Yes, Sandeep, I don't understand which quote you are talking about. Yes, okay. So I hope you people understood. Okay, even if you want to do the whatever the division also, okay, suppose मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करती हूँ, डिवीजन मुझे करना है, ओके, जैसे var 5 स्टोर करती हूँ और एक वेरिएबल लेती हूँ जिसमें मैं डिवीजन करना चाहती हूँ, तो यू कैन डू द डिवीजन आल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ओके। सपोज आई वांट टू डू द var1 डिवाइड बाय $var2, यहाँ पे मुझे डॉलर डालना पड़ेगा, $var1 डिवाइड बाय $var2, ओके। सो आई कैन डू दिस, ओके। ये मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, इको डिवीजन इज $var5, बराबर है। सो व्हेन आई विल एग्जीक्यूट, हो 1 सेकंड, स्निप कोलन एक्स shp3 में जब करती हूँ, देखो डिवीजन भी उसका 2 आ गया है। मतलब आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, ठीक है, समझा? Okay, there is one more way of doing the calculation with the help of the bc command. bc command आपको पता है कि when you are executing the bc, you are going inside the child shell, okay, ये एक्चुअली कैलकुलेटर ओपन करता है जहाँ पे आपको जो भी कैलकुलेशन चाहिए वो सारे कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, बराबर। इट्स लाइक द कैलकुलेटर ओनली, okay, for the linux system, but this calculator you can use within a shell script also, okay. So when you want to use within a shell script, how exactly you have to use this, okay. So once again I will show you pi p4, okay, इससे पहले p3 हुआ था, okay. So what is the syntax of using the BC calculator using the when you are doing the shell script? Okay, so first of all, I will store some value. 1 second. Set insert. Okay, मैं पहले यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर करती हूँ, सपोज var1 is equal to 100 and var2 is equal to something 45. Okay, now var3 में मुझे स्टोर करना है डिवीजन ऑफ var1 डिवाइड बाय var2, ओके, बाय यूजिंग द bc कैलकुलेटर। सो हाउ आई कैन डू दिस, सी द सिंटैक्स फॉर दिस। सो var3 में मुझे वैल्यू स्टोर करना है, सो आई नीड टू राइट डाउन var3 इज इक्वल टू इन द बैकटिक, क्योंकि var3 में मैं दूसरा कमांड यूज कर रही हूँ, ओके, bc कमांड में यूज कर रही हूँ। सो आई कैन यूज दिस bc कैलकुलेटर in the shell script with the help of this echo command, ओके, इको स्पेस, ओके। मुझे अभी यहाँ पे डिवीजन करना है, तो डिवीजन करते टाइम नॉर्मली ये इंटीजर के फॉर्मेट में आपको आंसर देता है, आपको इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, आपको फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो वो केस में हम लोग क्या करते हैं, डू यू रिमेम्बर इन द बीसी कैलकुलेटर, जब आपको डिवीजन में फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए, तो आपको उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, यू नीड टू डिफाइन द स्केल, बराबर है। You need to define the scale. How you define the scale? Scale is equal to 2 will give you the answer up to the 2 floating points, बराबर है। So do you remember scale? याद आया, पहले किया था हम लोग ने ये, yes, नहीं किया था ना, yes। तो स्केल मैंने डिफाइन किया, उसके बाद मुझे वेरिएबल 1 डिवाइड बाय वेरिएबल 2 करना है। सो हाउ आई विल डू दिस, डॉलर वेरिएबल 1 डिवाइड बाय डॉलर वेरिएबल 2, okay, then
you have to put the pipe and you have to specify you want to do this calculation with the BC calculator, and you need to complete this backtick. Okay, so whatever answer will be stored into the variable 3, you can access this answer as the answer is dollar variable 3. ठीक है, समझा? समझा कैसे लिखा मैंने बीसी कमांड? Okay, so when I will execute this P4, okay, 1 second. There is an unexpected end of file while looking for matching. Okay, there is a syntax error. Okay, so we'll see what exactly the syntax error is. मैंने देखो स्केल के पहले डबल कोट डाला है पर उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया है. ओके, सो मुझे इसको इंसर्ट एडिट करना पड़ेगा. यू अंडरस्टूड दिस? ये जो डबल कोट है वो मैंने यहाँ पे मुझे डबल कोट कंप्लीट करना चाहिए था पाइप के पहले. ओके, तो वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था, इसके लिए मुझे एरर आ रहा था. Okay, see, I'm getting the answer with the 2 floating point of the division. You understood this? Yes. समझा? Any doubt? Okay, we'll do one more program with help of this BC command. Okay, PI supports key file so that you will understand properly. Okay, suppose मैं एक variable लेती हूँ. वो P4 में स्टोर किया है ना हम लोग ने. ओके, मैं 2 मिनट रुकोगे तो ये प्रोग्राम कंप्लीट करती हूँ, मैं फिर उसके बाद दिखाती हूँ. ओके, ठीक है. तो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल वन और डिक्लेयर करती हूँ एज 20. ओके, वेरिएबल 2 बेसिकली बीसी कमांड हम लोग तभी यूज करते हैं जब आपको डेसिमल पॉइंट्स में उतने ही डेसिमल पॉइंट्स में आंसर चाहिए या डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर में ही आंसर आना चाहिए. वो केस में मोस्टली हम लोग बीसी कमांड यूज करते हैं. ओके, so suppose variable 2 I am declaring like the 3.14 15 9. Okay, तो ये डेसिमल पॉइंट वाला नंबर मैंने वेरिएबल 2 में स्टोर किया है. ओके, आई एम डिक्लेयरिंग वेरिएबल 3 where I want to do the calculation, so I will do it within the backtick sign echo. ओके, देन जो भी कैलकुलेशन करना है वो मुझे डबल कोट में लिखना पड़ेगा. ओके, डबल कोट में मैं पहले स्केल डिफाइन करूंगी. स्केल कितने स्केलिंग पॉइंट तक मुझे आंसर चाहिए. सपोज आई वांट अप टू द 4 स्केलिंग पॉइंट. ओके, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर तक मुझे आंसर चाहिए. देन आई नीड टू डिसाइड स्केल इज इक्वल टू 4. ओके, सेमीकोलन मुझे यहाँ पे सपोज मल्टीप्लिकेशन करना है बिटवीन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2. सो व्हाट आई विल डू, डॉलर वेरिएबल 1 मल्टीप्लाइड बाय डॉलर वेरिएबल, सॉरी मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 1 में ही मल्टीप्लिकेशन करती हूँ. ओके, ये हो गया. उसके बाद मुझे बीसी कमांड लिखना पड़ेगा एंड बैकटिक कमांड कंप्लीट करना पड़ेगा. बराबर है? समझा? ये बैकटिक मैंने स्टार्ट किया था, बैकटिक कंप्लीट किया. डबल कोड स्टार्ट किया था, डबल कोड भी कंप्लीट किया. ओके, ये हो गया मेरा वेरिएबल 3. देन I am doing one more calculation over in the same program and I'm storing it into variable 4. Okay, again the same thing, backtick sign echo. Okay, in the double quote whatever calculation you want to do. Suppose I'm again writing the scale is equal to 4 because I want the answer up to 4 floating point numbers. Okay, and here suppose I'm writing the dollar variable 3 and multiplied by dollar variable 2. ओके, मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले वेरिएबल 1 2 उसमें एक स्टैटिक वैल्यू स्टोर किया. ओके, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया एंड स्टोर किया वेरिएबल 3 में, और फोर्थ कैलकुलेशन में मैंने इसके पहले जो कैलकुलेशन किया वो एक्सेस किया. ठीक है, देन
BC, that tick need to complete. ठीक है, समझा? So I will display my final output as the final output is what? That is the dollar variable 4. समझा? You understood this program? मैंने क्या किया, वेरिएबल 1 में वैल्यू स्टोर की, वेरिएबल 2 में स्टोर की, उसका जो वेरिएबल 1 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल 1 जो है वो मैंने वेरिएबल 3 में स्टोर किया, और वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मैंने वेरिएबल 4 में यूज किया. ठीक है, सो we'll store this program, okay, and we'll execute this program. So you can see the final output you are getting in the decimal format. ठीक है, समझा? I hope you people understood how to write down the BC command or how you can do the calculation within the rectangular bracket. ठीक है, someone wants to see the program, that is the P4, right? Okay, any doubt in this P4? Okay, किसी को तो देखना था ना P4 प्रोग्राम. विवेक, okay, now I hope you people clear with this whatever we have done today. Yes, समझा? ठीक है, so this is what the basic concept, how exactly we are writing the shell programming. ठीक है, in the further lectures we'll learn more about this shell programming, what are the different things we can do within this shell programming. ठीक है, okay, I hope you people are executing all the tasks at your end also. आप execute करके देखते हो आपके साइड से भी? yes or no? बिकॉज जब तक आप लोग ये खुद से नहीं करोगे तब तक वो एकदम प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा, राइट? एंड व्हेन यू विल डू इट ऑन योर ओन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. इज इट राइट? ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. We will continue the next part of this cell programming in the next lecture. ठीक है, any doubt? Okay, good. Okay, so thank you so much. We'll meet in the next lecture. ठीक है.